Next topic is the molecular orbital theory, MOT. Very important for JEE Main and NEET. So it is basically based upon this LCAO, that is a linear combination of atomic orbitals to form molecular orbitals. Hybridization में क्या था? That atomic orbitals, they give rise to hybridized orbitals. Atomic orbitals से hybridized orbital बनते थे, and number of atomic orbital is equal to number of hybridized orbital. ये hybridization में हमने पढ़ा है. इसमें क्या होगा? Atomic orbitals they overlap to give molecular orbitals, and उसमें था कि that all the hybridized orbitals are same, they have the same shape, same energy. But इसमें क्या है कि molecular orbital जो बनेंगे वो दो टाइप के होंगे, BMO and ABMO. BMO का मतलब bonding molecular orbitals, और AB का मतलब antibonding molecular orbitals. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल सभी के सभी सेम थे, सेम एनर्जी, सेम शेप, बट इसमें एनर्जी सेम नहीं है. ये पॉइंट पढ़िए. बीएमओ हैज लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल. जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उससे बीएमओ की एनर्जी कम होगी, लेकिन एंटीबॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी. तो इसका मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं उनकी एनर्जी बीच में होगी दोनों की. यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो जो बॉन्डिंग है वो नीचे, जो एंटी बॉन्डिंग है वो ऊपर, उसकी एनर्जी ज्यादा. क्लियर? सो इसमें हाफ होगा, जैसे जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं. जैसे मान लो एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 2 होंगे. 2 में से एक होगा बॉन्डिंग, एक होगा एंटी बॉन्डिंग. एटॉमिक ऑर्बिटल आपके मान लो 6, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 होंगे. उसमें से 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग. ये इवन नंबर में होगा ज्यादातर, ऑड में नहीं आएगा. जब ऑड में आता है तो फिर नॉन बॉन्डिंग में भी जाता है. बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में एनर्जी जो है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब जिन्होंने बॉन्ड बनाया ही नहीं. अगर मान लो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे. 3 में से एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग, एक नॉन बॉन्डिंग. तो ये बेसिक है. जैसे ये पॉइंट जो है, BMO bonding molecular orbitals are formed by the addition of wave function, and antibondings are formed by the subtraction of wave functions. What's the difference between these? Suppose this is the one atom, it is the wave function of that molecular orbital. Say this is psi A. Psi is a wave function. When you add it to some other, this is second molecular orbital, atomic orbital, having wave function psi b. When these wave functions they are in phase, like when this wave function they become in phase. What is the meaning of phase? Just try to understand. Like this, so is same as that. No, is easily fit into this. Means like this and like this, fit in phase. Then there is a force of attraction. When there is a force of attraction, then an orbital is formed. This one, that is called a bonding molecular orbital. इसका जो वेव फंक्शन है psi a b, उसको लिखते हैं psi a plus psi b. This is bonding. What happens in antibonding? In antibonding, these two wave functions they are not in phase. Suppose these two are the orbitals, but when they come close to each other, their wave function they are not in phase. So they are out of phase. So then they will repel each other. Then you get a orbital of like this.
This is called ABMO, Antibonding Molecular Orbital, and this antibonding molecular orbital is represented by a star, and it is formed by subtraction of wave function. So as you can distinguish bonding and antibonding. So we have a two atomic orbitals. When they come close to each other, two possibilities are there. Either their wave function, they add up to give a bonding, or there is an attraction because their wave function are in phase. Or second possibility is that the wave function of these two atomic orbitals, they are out phase. When they are out phase, they repel each other. Repel each other means bond is not formed, or the orbital formed is called antibonding molecular orbital. Because here is a force of attraction, so the energy of bonding molecular orbital which is formed, that will be less than these two. And there is a repulsion, so energy of antibonding molecular orbital formed will be more than these two atomic orbitals. This is the base of the theory. Like when two atomic orbitals combined, they give two molecular orbitals. One is bonding, other is antibonding. Because there are two possibilities, like either the wave functions, they are in phase, or they are out phase. If they are in phase, energy decrease, attraction is there. You can say wave function add up. And when they are out phase, then the repulsion is there, energy will increase. Okay, there is the repulsive forces. So one major difference between the hybridization and this is that in hybridization we see that only the valence atomic orbitals combined give rise to hybridized orbital. हमने देखा कि जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, वही मिक्सअप होते हैं, उन्हीं की हाइब्रिडाइजेशन होती है. लेकिन इस केस में एमओटी में क्या होगा? All the orbitals of one atom, all the atomic orbitals of one atom, they overlap with the atomic orbitals of the other atom. All means starting from 1s. We have a two atom A and B. A का 1s, B के 1s के साथ, A का 2s, B के 2s के साथ, A का 2p, B के 2p के साथ. All the orbitals, whether they are filled, half filled or empty, कुछ भी हो, चाहे वो filled हो, चाहे वो half filled हो, चाहे वो empty हो, all the atomic orbitals they overlap to give molecular orbital. Common thing is that hybridization में ऐसा ही था कि जितने atomic orbitals थे उतने ही hybridized orbital है. इसमें भी यही है कि जितने atomic orbital है उतने ही उसमें molecular orbital बनेंगे. Again, difference is that hybridized orbitals are all of same energy and same shape, but here the molecular orbitals are of two types, bonding and antibonding. So this is the base of the theory. This linear combination of atomic orbitals is like this. When they combine linearly, means 1s of one atom combined with 1s of other, 2s of first combined with 2s of other, whether they are filled, half filled or empty, doesn't matter. So all the orbitals, they participate in the bond formation, not only valence. क्लियर? दिस थ्योरी थोड़ी सी हटके है. अभी तक जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा हमने, बीबीटी पढ़ा, उसमें क्या था कि ओनली द वेरियस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. नाउ यू विल से दैट ऑल द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन. सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर, दैट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम. हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम? So we will start with from hydrogen, okay, and then we will do some concepts which are generally used at competitive level questions. Suppose we are going to make a H2 molecule. H2 is formed by combination of two hydrogen. Configuration of this is 1s1, configuration of this is 1s1. This 1s is the atomic orbital. When we draw the structure, first we mark an arrow which represents energy. Here we will write H, here we will write H. These two atomic orbitals, they combine to give a molecule. Okay. So what is the configuration of this? This is 1s. What is the configuration of this? This is 1s. इसकी configuration हम यहाँ पे लिखेंगे. So draw the orbital. This is 1s.
हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, इसके बिल्कुल सामने पैरेलल बिकॉज बोथ ऑर्बिटल हैव द सेम एनर्जी 1s. These two are atomic orbitals. When they combine by two different ways. मैंने बताया था अगर इसमें अट्रैक्शन हो जाती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इनके नीचे, रिपल्शन हो जाती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इनके ऊपर. अब देखो आप इसकी एनर्जी जो है वो कम है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है. दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल है ना, दिस इज एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज योर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. और जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको क्या बोलेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. नाउ हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड. नाउ इसके अंदर जो है these are the molecular orbitals. You can see the red dotted line. Here we have a molecular orbitals. So there are 2 electrons total. So 2 electrons are filled only in this orbital. This is, we will follow Hund's rule, FO principle and Pauli exclusion principle to fill these molecular orbitals. First we will fill this because its energy is less than this. तो ये खाली रह गया. बॉन्डिंग वाले को हम बोलेंगे सिग्मा 1s. इसका नाम जैसे इसका 1s है एटॉमिक ऑर्बिटल है, सिग्मा 1s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो स्टार जो एंटी बॉन्डिंग में उसके ऊपर आप लगा देते हैं स्टार. सो व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2. तो हम लिखेंगे सिग्मा 1s 2, ब्रैकेट के ऊपर 2 लिख रहा है, 2 का मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. सिग्मा स्टार 1s में कुछ नहीं है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन. नाउ सपोज वी वांट टू ड्रॉ H2 positive. What happened in H2 positive is that if we again draw the energy arrow, here we have a hydrogen, here we have a hydrogen. Suppose one hydrogen is positive. The hydrogen which is positive has 0 electron in this, so it will form H2 positive. Out of these two, anyone you can take it as positive. So here is 1s, here is 1s 1. Again 2 atomic orbitals are formed like this, sigma 1s, sigma star 1, only 1 electron. So its configuration is sigma 1s 1. Okay. Next is suppose we have H2 negative anion. इसकी डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ. एनर्जी, here is hydrogen, here is hydrogen. Out of these two, one is negative, and we get a H2 negative. So here its configuration now become 1s2. Its configuration is 1s1. So draw, this is 1s2, this is 1s1. So when you draw the molecular orbitals, this is bonding, this is antibonding. So how many total electrons are there now? 3. So 2 electrons in this and 1 electron in this. What is its configuration now? H2 की sigma 1s2, sigma star 1s1. So as we represent the atomic orbital as 1s, 2s, 2p. Similarly, we represent the hybrid molecular orbital as sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, like that. So now if you compare these three, okay, so what is the configuration के बाद हम जो इसमें करते हैं वो है हमारा bond order. There is one term very important, that is a bond order. बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कितने बॉन्ड्स हैं.
कैसे कैलकुलेट करते हैं, NB माइनस NA बाय 2। NB का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO, और A का मतलब number of electrons in ABMO. That you can calculate easily. What is the bond order of this? If we write all the three here in the summary form. So we have three species: H2, positive, negative. Configuration: sigma 1s2, ये रही, sigma 1s1, sigma 1s2, sigma star 1s1. What to calculate bond order now? Bond order is bonding में 2, antibonding में 0 तो 1. Bond order is bonding में 1, antibonding में 0 तो half. बॉन्ड ऑर्डर इज बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 1 तो हाफ. तो these are the bond orders. Half bond order does not mean that the bond is half. It means the bond strength is half than that of single bond. सिंगल बॉन्ड की जितनी भी बॉन्ड स्ट्रेंथ है उससे हाफ. बॉन्ड ऑर्डर का आगे रिलेशन होता है, bond order is directly proportional to stability. Bond order is directly proportional to bond association energy. Bond order is directly proportional to 1 by bond length. So you must memorize these relations. You must know these relations. BDE मतलब bond association energy. Now, if the question is arrange them according to their stability, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी. सो H2 is the more stable. उसके बाद if the bond order is same, like here for H2 positive it is half, for H2 negative it is again half. Which is more stable? It doesn't mean that both are equally stable. Which is more stable? जिस केस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कम है, that is more stable. Because एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है रिपल्शन. Like here you can see there is one electron in antibonding. It means repulsion. Here is no electron in antibonding. So that means H2 plus की stability H2 minus से ज्यादा है. So this is your stability order. बॉन्ड ऑर्डर जिसका ज्यादा है उसकी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होनी है. जिसका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए उसमें कैसे डिसाइड करेंगे, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है. बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है repulsion that decrease the stability of that species. Okay, so this is about the molecular orbital diagram of these three species, H2, H2 positive and H2 negative. So how to draw this structure you must know now. Take on one side atomic orbital, other side atomic orbital, in between molecular orbital. So when we have two atomic orbitals like this is 1, this is 2, so you will get two molecular orbitals. एक की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी उसको बॉन्डिंग बोलेंगे, एक की एनर्जी उनसे दोनों से ज्यादा होगी उसको एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे. हीलियम He2, we know it does not exist, but just see with the help of this configuration is 1s2, second helium 1s2. Let's draw the structure. Here we have energy, helium 1 atom, helium second atom, both combine to give He2. So this is the 1s orbital of helium, this is the 1s orbital of this helium, and here you will get sigma 1s
here we get sigma star 1s. So there are 2 electrons here, 2 electrons here. So just fill it, 2 with here, 2 will be here. So find out the bond order now. So bond order equal to number of bonding. This is your bonding molecular orbital, electrons are 2. This is your anti-bonding molecular orbital, electrons are 2. 0. Bond order 0 means Ha2 that does not exist. Yeah. बाकी थ्योरी से भी किया था कि H2 does not exist. After that we have a lithium. Atomic number 3, Li2. For Li2, we have, suppose lithium is there, so 1s2, 2s1. Second lithium, 1s2, 2s1. So you can draw the structure like this. Here we have a lithium. Here we have a second lithium. When these combined, it will give you Li2. Okay. This is 1s of lithium. Now this is 2s of lithium, as 2s is more energy. This is the 1s of second lithium. This is the 2s of second lithium. Now see carefully. These 2 atomic orbitals, they combine to give 2 molecular orbital, sigma 1s, and 1 antibonding molecular orbital, sigma star 1s. Similarly, these 2 molecular orbital, 2s combined with the 2s of other, give you sigma 2s. And they also give 1 antibonding molecular orbital, that is sigma star 2s. See, these are the molecular orbitals in between these 2 lines, you can see. This is BMO, this is ABMO, this is again BMO, this is ABMO. Fill the electrons. 1s, इसमें भी 2, इसमें भी 2. 2s 1, इसमें भी 1. Now fill. In molecular orbital 2 plus 2 4, तो 2 इसमें आ जाएंगे भाई, 2 इसमें आ जाएंगे. 1 plus 1 2, ये दोनों के दोनों इसमें. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? LIP sigma 1s2 sigma star 1s2 sigma 2s2. Bonding. This is bonding, this is bonding, this is antibonding. Bond order equal to 4 minus 2 by 2, 1. If I ask to write the configuration of Li2 plus, plus means 1 electron less. So either you make this plus, if you make this plus, this electron will be disappear. And from here also 1 electron will go. The configuration remain sigma 1s2, sigma star 1s2 and sigma 2s1. This become lithium, lithium positive, lithium 2 plus. The bond order become equal to 2 plus 1, 3 minus 2 by 2, 1 by 2. If I say again change it into lithium, this is lithium again. Now about lithium negative. Lithium negative means make any one lithium negative. So suppose make it negative, become negative. So when you make it negative, 1 electron come here. So now electrons become 3, so 1 will go in here. So configuration become sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s1. Final bond order 2, 4 minus 3 by 2. So again 1 by 2. Stability order.
Here the bond order is 1, here half, here half. So out of these, lithium 2 is most stable. Then here you can see antibonding electrons are 2. Here the antibonding electrons are 3. Which is most stable now? Antibonding electron with 2 positive. So this is the stability order of lithium species, lithium, neutral, cation and anion. Okay. In this way then now we move to P orbital. For P you will take the example of say boron. So bond order is directly proportional to stability. Bond order is directly proportional to bond association energy. Inversely proportional to bond length. B2 boron plus boron. 1s2 2s2 2p1. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या हाइब्रिडाइजेशन में क्या था? That only the valence electron they participate. Like this is a valence electron. But in this case, इसमें क्या है? All the orbitals like 1s of this overlap with 1s of this, 2s with 2s, 2p with 2p. Let's draw the structure now. I will draw the structure here. This is your energy. 1s मैं ड्रॉ नहीं करूंगा, तो वो नीचे है, हम ऊपर वाला करेंगे. कॉन्फ़िगरेशन में उसको लिखेंगे. बोरोन boron B2. So 2s and 2p. We will draw only 2s and 2p. 2s, 2s. So these 2s orbitals give rise to one bonding, one antibonding. Sigma 2s, sigma star 2s. जब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उसमें sigma 1s2, sigma star 1s2 तो आएगा ही आएगा. वो तो हो गया, हमने ड्रॉ नहीं किया लेकिन वो है इसके नीचे है. P में क्या होगा? 3 इसके, इस बोरोन के 3 ऑर्बिटल. अब ये जो 3 ऑर्बिटल्स हैं ये हैं px, py एंड pz. px, py and pz. pz वो जो है pz वो बनाता है सिग्मा बॉन्ड. इसका pz उसका pz फॉर्म सिग्मा बॉन्ड. इसका px उसका px फॉर्म पाई बॉन्ड. इसका py उसका py फॉर्म पाई बॉन्ड. सो सिग्मा बॉन्ड जो है दैट इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. वी नो दैट. तो इन दोनों की एनर्जी जो है वो अलग होगी. जैसे हम यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे, पहले ये आ जाएंगे 2, फिर ऊपर 1, फिर ऊपर 2, फिर ऊपर 1. क्योंकि हमारे पास अब एटॉमिक ऑर्बिटल 6 है. ध्यान से देखो, 3 उधर 3 उधर. तो अगर 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनेंगे. पढ़ा था. और 6 में से 3 बॉन्डिंग में होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग में होंगे. ये तीनों क्या है? बॉन्डिंग. ये तीनों क्या है? एंटी बॉन्डिंग. अलग अलग क्यों है? क्योंकि सिग्मा और पाई बॉन्ड अलग है ना. इसका नाम होगा पाई 2px, इसका नाम होगा पाई 2py, इसका नाम होगा सिग्मा 2pz और दीज आर द बिग स्टार. पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz. ये तो होगी आउटलाइंस की. अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं. 2s में 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 यहाँ आ जाएंगे, 2 यहाँ आ जाएंगे. इंटरमिक्स नहीं करना. इसके ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के इसी में फिल हो जाने हैं, इनके इसमें फिल हो रहे हैं. इसमें 1 है, इसमें भी 1 है. ये 2 है. तो अब 2 किस में आएंगे? 1 इसमें, 1 इसमें. दोनों 1 में नहीं. हंस रूल. नाउ राइट द कॉन्फ़िगरेशन. ये तो हो गया. इसके बाद क्या आ जाएगा? सिग्मा 2s2
सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद आ जाएगा पाई 2px1, यहाँ p इक्वल साइन लगाना होगा क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सेम है। देखिए एनर्जी दोनों की सेम है, तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन बन गई है। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px1 एंड पाई 2py1। टोटल इलेक्ट्रॉन जो B2 में है, टोटल इलेक्ट्रॉन वो 10 है। 5 एक बोरोन में 5 तो देखो 2 4 6 8 9 और 10। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। बॉन्डिंग में कौन कौन है? वैसे तो आप ऐसा करो सिर्फ पी का ले लो क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 बॉन्डिंग 2 एंटीबॉन्डिंग, 2 बॉन्डिंग 2 एंटीबॉन्डिंग, लीव इट, टेक ओनली पी। पी में कितने एंटीबॉन्डिंग में है? 2, एंटीबॉन्डिंग 0 डिवाइड बाय 2 तो आ जाएगा आपका 1। बॉन्ड ऑर्डर इज 1। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ B2। ऐसे हम नेक्स्ट N2O2, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इसका, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे।